season for notorious colds and our children are the first people who are prey to it because children जो हैं, जो बच्चे हैं, उनका जो immunity system है वो बहुत ही moderately poor होता है, low होती है उनकी immunity, जिससे कि वो ज़्यादा prone होते हैं cold, cough और flu के symptoms से बच नहीं पाते। हेलो पीपल, मैं हूँ गरिमा भंडारी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि योगा इज़ अ मिरेकल वे। योगा की प्रैक्टिस से हम अपने बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि योगा से जो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है बॉडी का, वो बैलेंस आउट हो जाता है। ऑल्सो योगा की जब हम प्रैक्टिस करते हैं और उसको ब्रीदिंग से माइंडफुली अलाइन करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज़ जो थाइमस होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाइट ब्लड सेल्स के सर्कुलेशन के लिए, वो चेस्ट में सिचुएटेड होता है। सो उससे हमारी चेस्ट ओपन अप होती है एंड देयर इज अ फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ ब्लड रशिंग टुवर्ड्स आवर हार्ट, टुवर्ड्स आवर ब्रेन, एंड विच इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज उससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। हमारा ओवरऑल जो डिजीज़ फाइटिंग मैकेनिज्म होता है स्पेशली बच्चों का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड व्हाट हैपन्स एट होम नाउ, इफ़ आवर किड्स हैव कोल्ड कॉफ, सो कोल्ड वी ऑल नो इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, तो वो जब स्पून्स छूते हैं, डोर नॉब छूते हैं या हमारे साथ हम लोगों को टच करते हैं, सो नॉट जस्ट वन सिबलिंग गेट्स इट बट ऑल्सो पेरेंट्स गेट इट, सो द साइकिल कंटिन्यूज इन द होल फैमिली। अक्सर आप देखते होंगे, सुनते होंगे एक दूसरे को कहते हुए कि यू नो, आई गॉट कोल्ड फ्रॉम माई डॉटर, आई गॉट कोल्ड फ्रॉम माई हस्बैंड, सो दैट रन्स in the family. So that's why in this video let's practice a very easy yoga asana called the Ustrasana, which is an excellent heart opener and especially बच्चे इसको आसानी से perform कर सकते हैं, क्योंकि एक amazing back bend है और बच्चों की जो body होती है वो automatically naturally बहुत ही ज़्यादा flexible होती है, so that is very very strong for them. So let's see how we get started into Ustrasana यानी कि camel posture. So सबसे पहले Ustrasana के लिए we have to come on our knees like this, and from here place your hands on your iliac, on your stomach like this, keeping your back absolutely straight, opening your shoulders. It's an amazing back bend, so dropping your back and catching your toes from behind very slightly, very gently, and if the neck is strong, drop your neck behind like this, pushing your tailbone forward and both the knees stacked under your hips, keeping the navel towards your spine, opening the shoulders, and you can see the feet is flat on the floor from the ankle end, and staying here for as many breaths as you can, at least 5 to 6 breaths, inhale and exhale. And to come back, pushing the tailbone forward, bringing the hands back to the stomach and returning to your center very gently. So this was Ustrasana, and if practiced every day, not just by you as an adult but also for your kids, it's an excellent immunity booster. Builds your immunity, helps you fight the diseases, especially the winter diseases like cold and flu. And to watch more such amazing yoga asanas and practice with me, Garima Bhandari, subscribe to FitTech today. Don't forget to like the page and also keep giving us your feedback. Bye guys.